All right, guys, we're Indian students. We can't study till the time date is not out. And trust me, it's very, very boring to study. ठीक है, जब तक डेट नहीं आता. The moment date is out, the motivation, everything come back. So what I have done at CETking, see, CET का date will be coming in, कभी भी आ सकता है date, but exam most probably is going to be in June. So rather than waiting till June, I want to focus on the weekly target. So this is a target for the week. Yeah. आप जॉब करते हो, आप क्या करते हो, आई डोंट नो, आई डोंट केयर. आई वांट यू टू कंप्लीट ऑल दीज टॉपिक्स इन द नेक्स्ट 1 week. Yeah. So if you can complete this weekly target, no one can stop you from getting a good score. ठीक है. So rather looking at a bigger picture, CET कब होगा, CAT कब होगा, CAT नवंबर में होएगा most probably. फिर ये होगा wave 3, wave 4 आएगा कि नहीं आएगा, कोविड हो गया तो क्या होएगा. अब बाबा तू पहले weekly target तो follow करो. So this week we are covering almost 25 mark का paper for CET and the basis of CAT. CAT में we are still at the basic level. Strong argument, direction sense, parajumble, time and work, mensuration, DLR. So every week, every day class. CAT वाले के लिए 1 hour every day, CET वाले के लिए 2 to 3 hours every day. Fine. Why we have a lecture every day? So that if you miss any class, you will feel it. कि अरे यार मेरा class छूट गया, मेरा miss हो गया. Because if you're studying at home now, if you miss any class, you won't feel it. So in classroom also, in offline, online, both the ways, both the places, the same thing is going on. In fact, I'm traveling to Nagpur on Wednesday. So tomorrow I'm in Vashi. Wednesday I'm in Nagpur. Thursday I'm in Pune. Yeah, in case you want to attend the workshop, please do call the numbers given here and you can attend the वर्कशॉप एज वेल. यू कैन मीट मी. कल वाशी में है, परसों नागपुर एंड देन पुणे. सो आई एम ट्रैवलिंग टू ऑल द लोकेशन. येस्टरडे आई वाज इन बॉम्बे. तो अभी किसी ने बोला कि ये बॉम्बे में कब आओगे, तो बॉम्बे हो चुका मेरा, कल हो गया. तो अगले हफ्ते अगेन आई विल स्टार्ट अगेन. सो लेट्स फॉर द वीकली टारगेट फॉर कैट, फॉर सीईटी. नेक्स्ट वीक क्या हो रहा है आई डोंट केयर, तब की तब देखी जाएगी. सो वी आर कवरिंग ऑलमोस्ट 20-25 मार्क का पेपर दिस वीक. Fine, this is a strategy I follow. Fine. यार तेरे से वीकली टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहे तो वेट करा सर डेट कब आएगा. मेरे ना पढ़ने को मन नहीं कर रहा बिकॉज सीईटी का डेट नहीं आ रहा है. अरे भाई तू पहले अपना होमवर्क तो कंप्लीट कर. तो सेम टॉपिक इज गोइंग टू बी योर होमवर्क, सेम टॉपिक इज गोइंग टू बी योर टारगेट्स, सेम टॉपिक इज गोइंग टू बी एवरीवेयर. सो लेट मी बी द ड्राइवर ऑफ योर कार. सो आई एम गोइंग टू प्लान योर टाइम टेबल इन सच अ वे, जैसे एग्जाम का डेट आएगा विल इंक्रीज द नंबर ऑफ आवर, इंक्रीज द एफर्ट, एवरीथिंग विल इंक्रीज बिकॉज आई डोंट वांट टू बर्न आउट. Fine. So if you can complete these weekly targets, that's close. That's it for the week. Then next week I'll come with the new targets. And there's no relationship between the two targets. ऐसा नहीं कि ये हफ्ता कुछ किया वो अगले हफ्ते काम आएगा, नहीं. वो अलग चीज है, ये अलग चीज है. Okay. So this is going to be a timetable for the next 1 week. All right. Fine. So this is how we're going to plan. पीयूष, यस, आपने 2 दिन पहले ज्वाइन किया, बिल्कुल. अभी वी हैव इनफ टाइम, टाइम की कमी नहीं है. आप ये वीकली टारगेट फॉलो करते जाओ, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस.